কলকাতা টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অঙ্কুর। আজকে একটি বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী টিভিকের প্রধান বিজয় জোসেফ বিজয়। একটি বৈঠক ডেকেছিলেন তামিলনাড়ুর সমস্ত সাংসদদের নিয়ে। এই মুহূর্তে টিভিকের কোনো সাংসদ নেই, অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের অর্থাৎ ডিএমকে, এআইএ ডিএমকে, কংগ্রেস, এই সমস্ত দলগুলির সাংসদদের নিয়ে তিনি একটি বৈঠক ডাকেন। আসন্ন যে সংসদের বাদল অধিবেশন চলছে, শোনা যাচ্ছিল যে সেখানেই একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি পেশ করা হতে পারে, এবং সেই বিল পেশ করা হলে তামিলনাড়ুর অবস্থান কি থাকবে। এর আগে আমরা দেখেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিজেপি ডিএমকে এর সঙ্গে একটি আলোচনা করে। একদিকে ডিএমকে এই বিলের পক্ষে যাওয়ার রয়েছে, এমন যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটাই খবর, এবং সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ডিএমকে এর সঙ্গে কংগ্রেস যেহেতু ছিল, সেই কংগ্রেস এই মুহূর্তে বিজয়কে টিভিকে সাপোর্ট দিচ্ছে বলে সেই কারণে ডিএমকে খানিকটা ক্ষুব্ধ, এবং এই মুহূর্তে ডিএমকে গতবার যারা শাসনে ছিল তারা এই মুহূর্তে বিরোধী আসনে। সেই ডিএমকে বলেছে যদি এই বিলে আসন পুনর্বিন্যাস সংবিধান সংশোধনী বিলে যদি এটা লিখিত থাকে, প্রত্যেকটি রাজ্যের 50% আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব বাড়বে, এবং তার পাশাপাশি এটা বিলে যদি লিখিতভাবে যদি এই আশ্বাস দেওয়া থাকে, তাহলে তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রেও আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে তারা আপত্তি জানাবে না, তারা এই বিলকে সমর্থন করবে। এটা শোনা যাচ্ছিল, এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ঘোষণা নেই। কিন্তু কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধী। তারা বলে আসছিল যে এই বিলটা যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে দক্ষিণ যে ভারত রয়েছে, সেই দক্ষিণ ভারতের তেমন ভাবে কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না লোকসভায়, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এই বিল এই কারণেই আনছে যে উত্তর ভারত এবং পশ্চিম ভারত, সেখান থেকে যত পরিমাণ আসন বাড়বে সেই আসনের ভিত্তিতেই তারা আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। এই কারণেই এই বিল আনার চেষ্টা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং সেই বিষয়টি নিয়ে সাংসদদের কি মতামত তা জানতেই আজকে টিভিকের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ বিজয় একটি বৈঠক ডেকেছিলেন চিপকের কাছে। একটি সরকারি অডিটোরিয়ামে এই বৈঠকটি শুরু হয়, এবং সেই বৈঠকে তামিলনাড়ুর 39 জন লোকসভার সাংসদ এবং 18 জন রাজ্যসভার সাংসদ, মোট 57 জন সাংসদের মধ্যে মাত্র 21 জন উপস্থিত ছিলেন। ডিএমকে বৈঠক বয়কট করে, এআইএ ডিএমকে এই বৈঠক বয়কট করে, বাকি কংগ্রেস গিয়েছিল, অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই বৈঠকে অংশ নেয়, এবং সেখানেই যে সমস্ত সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আগামী দিনে যদি লোকসভায় এই বিলটি উপস্থাপিত হয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে এই বিলটির প্রতিবাদ করবে তারা, এবং সেক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য লোকসভার যদি আয়তন বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ আসন সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, 543 থেকে যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তামিলনাড়ুর জন্য সেটা খুব একটা কাজে আসবে না, অকার্যকর হয়ে যাবে এই পুরো বিষয়টি, এবং সেক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর যে বলার জায়গাটা সেটা কমে যাবে বলে মনে করছেন তামিলনাড়ুর এই সাংসদরা। যদিও এই যে বৈঠক, সেই বৈঠককে প্রহসন বলেই আখ্যা দিয়েছে ডিএমকে, এআইএ ডিএমকে। আজকে 57 জনের মধ্যে মাত্র 21 জন উপস্থিত ছিলেন, 36 জন সাংসদ গড়হাজির ছিলেন, এবং সেই বিলে সর্বসম্মতভাবে আগামী দিনে এই বিলটিকে পুরোপুরিভাবেই বলা হয়েছে যে বিলটির বিরোধিতা করা হবে। যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন রুখে দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন সাংসদরা আজকের বৈঠকের পরে। তামিলনাড়ুর যে প্রতিনিধিত্ব তার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করা যাবে না, এ বিষয়ে একমত হয়েছেন সকলে। জনসংখ্যা বা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি কোনোভাবেই এই বৃদ্ধি তারা চাইছেন না। লোকসভার আসন সংখ্যা 543 রেখে দেওয়ার পক্ষেই সহমত সকলে। সংসদের আয়তন বা সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করলে তা অকার্যকর হবে, সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তামিলনাড়ুর জন্য তা ভালো হবে না। আজ এই সিদ্ধান্তেই সকলে উপনীত হয়েছেন। দেখা যাক এ বিষয়ে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার কোন পথে যায়, কারণ ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা সুখবীর সিং বাদল অর্থাৎ শিরোমণি অকালি দল, তারা যে এই বিষয়ে সমর্থন করবে সেই তাদের সমর্থন তারা আদায় করে নিয়েছেন। সুখবীর সিং বাদল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছেন। অন্যদিকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসেরও কয়েকজন সাংসদের সমর্থন পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আম আদমি পার্টির থেকে আমরা দেখেছিলাম
বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যে প্রায় 10 জন জয়েন করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে, শিবসেনা থেকে 6 জন জয়েন করেছিলেন। ফলে সেই জায়গা থেকে একটা বড় অংশ এখনো পর্যন্ত এই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই বিল পাশ করাতে গেলে লাগবে সংসদের 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে বেশ খানিকটা কম রয়েছে এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির বা এনডিএর সাংসদ সংখ্যা। সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কি চাল দেয় অমিত শাহ বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেদিকেই সকলে তাকিয়ে রয়েছে। দেখা যাক, সেই খবরের আপডেট অবশ্যই থাকবে কলকাতা টিভির পর্দায় রাত দিন 7 দিন। தீர்மானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதலமைச்சர் தான் அதை வந்து வெளியிடணும். நாங்க பேசினதுல ஒருமித்த கருத்து என்னவென்றால், தொகுதி சீரமைப்பு என்பது எந்த வகையிலும் தமிழ்நாட்டை பாதிக்கக்கூடாது. பாராளுமன்றத்தை உறுப்பினர்களை உயர்த்துவதில் எங்களுக்கு எதிர்ப்பு உண்டு. 543 பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த 543க்குள்ளே தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கின்ற 39 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய. ஃபேர் டீலிமிட்டேஷனே கிடையாது. நீங்க வந்து பாராளுமன்றத்தை 815ஆகவோ 850ஆகவோ உயர்த்தி அதே ரேஷியோவை நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தாலும் அந்த பாராளுமன்றம் எந்த விதமான பயனும் அளிக்காது. ஏற்கனவே 543 பேருக்கே பேசுறதுக்கு நேரம் கிடையாது. இதை 850 பேரோ 815 பேரோ பாராளுமன்றத்தில் இருந்தாங்கன்னா யாருக்கும் பேசுறதுக்கு நேரமே கிடைக்காது. நீங்க இந்த பாஜக அரசாங்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பாராளுமன்றம் கூடுற நாட்கள் குறைந்து கொண்டே போகுது. இந்த குறைந்து கொண்டு போகின்ற பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை கூட்டினீங்கன்னா ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் எந்த வகையிலும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. அது ஒன்றும் குவாலிட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி வில் நாட் இம்ப்ரூவ் வித் அ லார்ஜர் பார்லிமெண்ட். We are very clear that the number of parliamentarians in India in the Lok Sabha must be frozen at 543. This freeze must continue, and the distribution among the states in the same ratio as it is today must continue, and Tamil Nadu must have 39 members within a 543 member house. Boycotting this meeting. See, this is an issue which is beyond politics. This is an issue which is about the rights of Tamil Nadu and our representation in the Union of India. It's unfortunate that they do not participate in a meeting like this. While the DMK voted against this bill last time, the circumstances have not changed. I hope they will adhere to the same principle again. வாய்ப்பு இருக்கலாம். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சீக்கிரம் தேர்தல் வரும்னு ஆசை காட்டி பிஜேபி மோசம் பண்றதுக்கு அதுலயே அந்த டிராப்ல அவங்க உழுவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது. திமுக அதிமுக ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு ஒரே நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காங்க. சொல்றேனே, இந்த விஷயம் வந்து அரசியல் ரீதியாக பார்க்க கூடாது. இது வந்து தமிழ்நாட்டோட உரிமைகளாக நீங்க பார்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டோட பிரதிநிதித்துவம் நீங்க பார்க்க வேண்டும். இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு இது ஆபத்தா நல்லதா என்று பார்க்க வேண்டுமே தவிர இது வந்து ஒரு அரசியல் கோணத்துல கட்சி கோணத்திலும் பார்க்க கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து.